Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope that you all are fine. Today is 9th of June 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School Unisoo. Today our topic is demographic transition theory. This is one of the theories of population, as in the earlier class we read about Malthusian theory of population. So today we will discuss about this theory, demographic transition theory. Basically, transition means transferring from one point to another, from one level or from one stage to another. And demographic transition means the changes in the birth and death rates, and we can say, or the changes in the population composition, population dynamics, population size from one stage to another stage. And this theory, demographic transition theory, this concept was given by W. Thompson, and it was elaborated by F. W. Nordstein. Both of these were American demographers. So the aim of this theory was, this theory throws light on changes in birth rate and death rate, and consequently on the growth rate of population. As I earlier said, that the main, we can say, idea here is that it studies the changes in the birth rates and the death rates. We can say how the changes occur from high birth and death rates to lower birth or death rates, and overall how the rate of the population growth changes from one stage to another stage. The relationship between birth rate and death rate changes with economic development, and a country has to pass through different stages of population growth. Now, according to these demographers, or according to this demographic transition theory, the changes in the death rate and birth rate are related to the economic development of a country. So we can see the rate of the population growth depends upon the economic development of a country, and every country has to pass through different stages of population growth. सादा अल्फाज में हम ऐसे कहेंगे, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इसमें जो अहम एक पहलू है वो है कि कैसे एक आबादी का तनासुब एक स्टेज से, एक मरहले से दूसरे मरहले तक पहुंचता है, चेंज होता रहता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। और इसमें जो खास चीज़ें देखी जाती है वो है चेंजेस इन द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। जो शरह पैदाइश है और जो शरह अमवात है, उनमें कैसे तब्दीली आती है, और इन सब को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब कि रो से देखा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एक मुल्क के अंदर जो इक्तिसादी या मुआशी तरक्की होती है, तो जिस कदर वहाँ पर तरक्की होगी तो उस हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी चेंज होता रहेगा। तो ये इसका एक ख़ास जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, तो ख़ास पहलू इसका ये है कि इसमें जो शरह पैदाइश और शरह अमवात में जो तब्दीलियाँ आती हैं, या हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी का जो तनासुब बदलता रहता है, वो इस हिसाब से बदलता रहता है कि उस मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या जो इक्तिसादी जो मुआशी तरक्की है, तो उसके रौ से देखा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ या जो बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स से उनमें जो तब्दीलियाँ उसी हिसाब से वाक़ा होती हैं। और इसमें कहा गया है कि हर मुल्क है जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से, मुख्तलिफ जो मराहल हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आबादी का जो तनसब है, तो उसमें मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है, हर मुल्क मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है। सो बेसिकली देयर आर 4 stages of demographic transition. First stage pre-modern society, second stage urbanizing or industrializing society, third stage mature industrial society, and fourth stage post-industrial society. So under demographic transition, as we read that every country has to pass through different stages of population growth. So there are 4 stages of population growth. First stage is pre-modern society.
second is urbanizing or industrializing, and third is mature industrial society, and fourth stage is post-industrial society. Now we will discuss these different stages one by one. First stage pre-modern society, as the term itself denotes, that word itself denotes. Pre-modern means before modern, before industrial society, before industry, we can say before industrial revolution. This stage occurs in agrarian societies, those societies where the main economic activity of people is this agriculture and its allied activities, domestication of plants and animals, like farming, we can say growing crops. So this is the main economic activity in this agricultural society or agrarian society. About 200 or 250 years ago, all the countries of the world were passing through this stage. So because this stage has passed, it is known as pre-industrial stage. Today we are in the industrial stage. So almost all the countries have passed through this stage of this we can say population growth, or through this stage. In this stage, the birth rate and death rate are high and roughly in balance. So the main thing here is that in agrarian society and pre-industrial society, both birth rates and death rates are high and they are roughly in balance. मतलब कि इस मरहले में जो पॉपुलेशन जो होती है, आबादी जो होती है, वहाँ पर जो बर्थ रेट्स, जो शरह पैदाइश होती है, और डेथ रेट्स, जो शरह अमवात होती है, वो दोनों ज़्यादा होते हैं. मतलब वहाँ पर बच्चों की पैदाइश भी ज़्यादा होती है और साथ साथ मतलब लोगों की अमवात भी ज़्यादा होती है. तो उस हिसाब से इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस, एक तवाज़ुन कायम होता है बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है और डेथ रेट भी ज़्यादा होती है, शरह पैदाइश भी ज़्यादा होती है और शरह अमवात भी ज़्यादा होती है. तो इसकी वजह से ये दोनों एक तवाज़ुन पर कायम रहते हैं, बैलेंस हो जाता है इन दोनों के दरमियान. Now characteristics of first stage: population density is low or moderate, general productivity is low, life expectancy is low, development of non-agricultural sector is at its infancy stage, masses are generally illiterate, lack of technological know-how. These are the characteristics of this stage, because both this birth rate and death rate are high. So the population density is also low or moderate. Population density means the ratio of population to the total surface area, or in other words we can say the number of people living in per square किलोमीटर. एक मुरबा किलोमीटर या माइल जो मील है उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है. जनरल प्रोडक्टिविटी इज़ लो बिकॉज देयर इज़ नो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होती है, तो वहाँ पर जो जनरल प्रोडक्टिविटी होती है, पैदावार होती है, तो वो कम ही होती है क्योंकि उतनी तरक्की पे नहीं होते वो, मतलब वो स्टेज, वो सोसाइटी. तो वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, लो होती है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो. नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि कितने सालों तक अमूमन एक जो शख्स है वो ज़िंदा रहता है, तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं. हम कह सकते हैं वी कैन से द लाइफ स्पैन, वो भी लो होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के मुकाबले में जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी है, वहाँ पर लोगों की जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है. Development of non-agricultural sectors is at its infant stage because this is basically an agricultural society. So the agricultural sector is at its infancy stage. It's at its, we can say, beginning stage. The agricultural activities are basically there is not too much technological advancement in the agricultural field, so it is its infancy stage, it's its beginning stage. Masses are generally literate, and the population usually, and the population is illiterate. Most the, we can say, people are uneducated. Lack of technological know-how.
because this is not technologically advanced society, so people do not have this technological know-how, because there is also illiteracy. तो यहाँ पर ये चंद जो खसूसियात इस सोसाइटी के होती है, एक तो आबादी का जो डेंसिटी जो होती है वो कम होता है, तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होती है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, और यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कम होती है. Now second stage is urbanizing or industrializing society. This stage represents a developing country where the death rates drop rapidly due to improvement in food supply and sanitation, which increase lifespan and reduce disease. Afghanistan is currently in this stage. Now the second stage is urbanizing or industrializing. This stage represent a developing country where the death rates drop rapidly due to improvement in food supply and sanitation. So in this stage the death rate is dropped down because there is, we can say, improvement in food supply, there is improvement in public health, hygiene and sanitation, and due to these things the lifespan, the average life expectancy of people also increases. There is improvement in lifespan or life expectancy of people, and this death rates drop down, and due to this improvement in public health, in medicine, and we can say the diseases are also controlled. So the occurrence of diseases is also controlled, and in this stage the birth rates are high but the death rates are low. So this is the main thing in this इंडस्ट्रियलाइजिंग और अर्बनाइजिंग सोसाइटी. और हम यहाँ पर एक एग्जांपल अफगानिस्तान की दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है, जहाँ पर तरक्की पजीर जिसे हम कहते हैं, कि वहाँ पर चूँकि प्री इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सोसाइटी से वो उस मरहले से वो गुजर कर अब अर्बनाइजिंग और दिस इंडस्ट्रियलाइजिंग स्टेज पर आ गया है. तो यहाँ पर क्या होता है कि बर्थ रेट जो होती है वो मतलब ज़्यादा ही होती है, लेकिन जो डेथ रेट से उस पर कम मतलब कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो इस पब्लिक हेल्थ या जो सैनिटेशन होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है. वहाँ पर जो फूड सप्लाई होता है या न्यूट्रिशन होता है उसमें बेहतरी आती है. साथ साथ जो डिजीज़, जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए एक अच्छा जो इंतज़ाम किया जाता है, हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर बीमारियों का इलाज होता है, तो बीमारियों पर कंट्रोल भी, काबू भी पाया जाता है. तो उस सूरत में जो डेथ रेट से शरह अमवात है वो कम हो जाती है. और इसकी एक मिसाल हमारे पास अफगानिस्तान है. अब इस स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? न्यूमरस इम्प्रूवमेंट्स इन पब्लिक हेल्थ, रिड्यूस मोर्टेलिटी, इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी. तो यहाँ पर ख़ास दो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्रियलाइजिंग होता है या अर्बनाइजिंग होता है वहाँ पर मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ होता है, सेहत आमा जिसे हम कहते हैं, हॉस्पिटल्स या बाकी जो सेहत के इदारे कायम होते हैं, साथ साथ उनकी वजह से जो बीमारियों पर काबू पाया जाता है, इलाज व मुआलजे के लिए बेहतर सहूलियत यहाँ पर फराहम की जाती है. तो उस वजह से जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, तो वो कम हो जाती है. और साथ साथ यहाँ पर जो वुमेन है उनकी भी जो लिटरेसी है वो बढ़ जाती है, कि यहाँ पर जो औरतें हैं, जो वुमेन है, वो भी एजुकेशन, जो तालीमें हासिल करती हैं, तो उसकी भी जो परसेंटेज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है. Then there is third stage, mature industrial society. This stage consists of declining birth rate. Mexico's population is currently at this stage. Now there is mature industrial society. So this is third stage. In this stage, birth rates decline. There is decline in birth rate. As you earlier read that in the industrializing or urbanizing stage, the birth rates are high, but there is drop in the death rates. But in this stage, in this mature industrial society, the birth rates are also
declining. There is decrease, there is we can say uh, the birth rates are decreasing due to there are different factors responsible for this declining birth rate. For example, we can say due to use of contraceptives, due to improved this medical facilities. We have an example of Mexico, where Mexico is presently in this stage where the birth rate is declining. So here the birth rate declines, यहाँ पर जो शरह पैदाइश होती है वो कम होती है. अब यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं that led to the declining birth rate वो है first access to contraception, increase in wages, urbanization, a reduction in subsistence agriculture and increase in the states and education of women. तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से क्योंकि एक्सेस टू कंट्रासेप्शन होता है, जो मतलब मानने हमल जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि ऐसे मेथड्स ऐसे मेजर्स यहाँ पर आ जाते हैं जिनकी वजह से जो प्रेगनेंसी है, जो हमल है, उसको रोका जाता है. तो कंट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनकी वजह से जो बर्थ रेट है वो कम हो. देन देयर इज इंक्रीज इन वेजेस, अर्बनाइजेशन, जो मतलब फ्रॉम रूरल, ये जो सोसाइटी है वो अर्बन होती जा रही है, उसमें जो अर्बनाइजेशन मतलब बढ़ती जा रही है. तो लोगों, इसका मतलब है कि जो देहात से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, हर तरह से उनमें चेंजेस आती है. फिर सोशल लाइफ में भी उनकी चेंज आती है. तो चूँकि अर्बनाइजेशन में जो फैमिलीज़ होती है वहाँ पर छोटी फैमिली का रिवाज होता है बनिस्बत जो रूरल फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं. क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन होता है तो उस वजह से भी फैमिलीज़ को स्मॉल रखा जाता है, उनका साइज़ जो है वो छोटा ही रखा जाता है. तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा कंट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं. देन देयर इज़ रिडक्शन इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स यहाँ पर चूँकि आपने देखा एग्रीरियन सोसाइटी में लोग उसी पर अपना गुजारा करते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ पे, लेकिन यहाँ पर उसमें भी कमी आती है क्योंकि लोग अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं. तो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इकॉनमी होती है वो यहाँ पर उसकी जो अहमियत है वो कम होती जा रही है. तो इसका मतलब यहाँ पर कम लोग एग्रीकल्चरल इकॉनमी या एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. देन देयर इज़ इंक्रीज इन द स्टेट्स एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन. तो वुमेन की जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ जाती है और उनका जो स्टेटस क्योंकि उनको जॉब करने का या बाकी फील्ड्स में अपना हुनर दिखाने का स्किल्स जो एजुकेशन है उसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो उनके लिए ये रास्ते खुले हैं होते हैं. तो उनका स्टेटस भी और साथ साथ उनकी जो एजुकेशन है वो भी बेहतर हो जाती है. देन देयर इज़ फोर्थ स्टेज, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज. इन दिस स्टेज बोथ द बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो. The population is either stable or grows very slowly. North America, Europe, Japan, Australia, New Zealand are supposed to reach this stage. Then this is post-industrial society, which are highly industrialized. These are known as developed countries. For example, we have United States of America, or we can say we have this New Zealand, we have Japan. So in this stage, both the birth and death rates are low. This is the stage where both birth rates and death rates are low. It is opposite to this agrarian society where both high birth rates and death rates are high. But in post-industrialized society, birth rates and death rates both are low. The population is either stable or grows very slowly. In this stage, population, due to the balance in this birth rate and this death rates, because both are high, so the population is stable. The population growth is stable, or sometimes it grows very slowly because some factors are responsible. For example, due to this we can say famines, due to earthquakes, due to floods or natural calamities that may reduce this population, we can say due to large scale deaths of people, because there is a balance between death rates and birth rates. So when due to natural calamities the death rates increase, so sometimes in this stage population grows slowly. So these are the examples of these countries are some examples who are passing through this post-industrial society. So in these countries the population is
we can say at stable stage, or we can say it grows slowly, because there is balance between birth rates and death rates. So characteristics of this stage are: death rate may remain constantly low or increase slightly due to increase in lifestyle disease or low exercise levels. So these are post-industrial societies, these are urbanized societies. So here death rate may remain constantly low because due to increase in lifestyle diseases or low exercises levels. Birth rate is low because people have more opportunities to choose if they want children. The population is highly urbanized. The literacy levels are high. The degree of labor specialization is also high. These are the characteristics of fourth stage. First, the birth rate is low because as this is urbanized post-industrial society, there are so many developed, or we can say advancement in the medical field. There are so many techniques through which birth rates can be controlled, contraceptives, through we can say now the people have choice, because it is urbanized society. People usually have small family size, so they have choice to limit their population. And next is the literacy level is high, so people have access to, we can say, different medical, or for example we can say public health is advanced, the nutrition level is advanced. So under this stage both birth rate and death rate are low. So death rates are low due to this increase in the advancement in the medical fields, and we can say the disease are controlled. There is advanced public health and we can say this hygiene, sanitation, these are all in advanced stage. So under this stage the literacy levels are high, the degree of labor specialization is also high. Here the specialization of labor, or we can say division of labor, is complex, or we can say high, because this is industrialized society. So every this task, every work is divided into different segments, and every part is performed, every part is, we can say, the work is divided into different specialized segments, and every task is done by a specialized person. So there is division of labor, and medical facilities are available, public health hygiene is advanced, and nutrition levels, food supply, everything is in advanced stage. So literacy level is high, people have access to different birth control measures, methods, and it's urbanized society, so people usually have small family size. So due to these factors, here the birth rate is low, and also death rates are low. But at some times, due to natural calamities, this death rate may increase, and the population growth may be slow.